Good morning, students. Today our next topic is expanded form. Students, don't be confused. Confusion लेने की आपको कोई नीड नहीं है, because it is the same way as we did in the previous class or as we did in the yesterday's class. Okay, students? Like it is a number 75. Okay, how to write 70 in expanded form? Expanded means आप 70 को लॉन्ग फॉर्म में, मीन्स उस नंबर को आप अलग अलग ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, ये होता है आपका एक्सपैंडेड फॉर्म. सो स्टूडेंट्स, हमने कल पढ़ा था आपको नंबर्स की पोजीशन पता होनी चाहिए. सो 5 इज एट 1's place and 7 is at 10's place. So how to write in expanded form? Firstly starts to write in expanded form from this. हमने पोजीशन मार्क कहाँ से करनी है? इस साइड से करनी है. लेकिन जब हम एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमें लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है? दिस साइड से. मीन्स हमें फर्स्ट इस साइड के नंबर को कंसिडर करना है. ओके, सो हाउ वी राइट इट? जस्ट लाइक अ प्लेस वैल्यू. तो हमने कल प्लेस वैल्यू कैसे करी थी? 7 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 70. ओके, और 1 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? 5. ओके, तो देन आप इन दोनों के बीच में क्या मार्क कर देंगे? प्लस साइन मार्क कर देंगे. और आप 70 प्लस 5 को ऐड करेंगे, क्योंकि ये वाला साइन कौन सा है? प्लस का साइन है, तो दैट इज 75. Okay, let's take another example. 82. How to write 82 in expanded form? Write from here. कैसे लिखेंगे? और in another way you can say how many digits after 8? Only 1. Then write 8 और उन digits के नेम का 0. Then put the sign of plus and then 2. Okay, because 8 is at 10th position. तो हम 10th position में कितनी zeros आती है? How many zeros in 10? Only 1. So write only 1 0 and no zero is at 1's place. So single number is 2. So this is the way how to write in a expanded form. So next one is write in short form. It is just simply opposite to the expanded form. Means ये बिल्कुल opposite है expanded form का. Means हमने 70 plus 5 लिखा था ना expand करके, तो अब 70 plus 5 करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 75. Okay, suppose 20 plus 2. How to write? Yes, it is 22. हमें पता कैसे चला? How we will get know it is 22? Took first digit of this and then make a number. Next one is 50 plus 3. How to write? Take first digit and this digit. The number is 53. Next one is 10 plus 4. How to write? Take one digit of this and this. 40. Let's take another example. 70 plus 8. 90 plus 9. How to write 70 plus 8? Take 7 first digit and this digit. 78. How to write this? Take first digit and this digit and 99. Now we begin with the topic comparing and arranging 2-digit numbers. Okay students,
सो हम कंपेयर एंड अरेंज करेंगे 2 डिजिट नंबर को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द कंपेयरिंग. सो स्टूडेंट, सपोज two numbers are given in front of you, that is number 72 and 35. Okay students, so we will compare between these two numbers that which one is greater. So how to compare? First of all, put their position. 2 is at 1's position and 7 is at 10's position. Here also 5 is at 1's position and 3 is at 10's position. So now second step is start compare from 10's position. Okay, we start compare from this side, and in this digit we also from this side. So compare this 10's position with this 10's position. Compare 7 or 3. Which one is greater? Yes, 7. So put this sign, means sign towards the 7, means this open mouth sign. This sign is the greatest symbolic sign. मतलब ये साइन क्या शो करता है? जो नंबर ग्रेटर हो उसकी टूवर्ड्स आपको करना है. तो 72 इज ग्रेटर देन 35. ओके स्टूडेंट्स, आपको कंपेयर कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको अनदर नंबर के 10th प्लेस के डिजिट से कंपेयर करना है. ओके, नाउ मूव टू द अनदर वे. स्टूडेंट, in this, here it is a 2 digit and here it is only a 1 digit. So the number in which digits are greater means जिस नंबर में डिजिट्स ज़्यादा होंगी, इसमें 2 डिजिट है और इस नंबर में ओनली 1 डिजिट है. सो अल्टीमेटली जिस नंबर में ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, लार्ज और मोर नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी, उस वो नंबर अल्टीमेटली ग्रेटर होगा अनदर नंबर से. सो 29 is greater than single number 8. So we put this sign towards 29. Next example is this. So how to compare these two numbers? First of all, put their positions. The ones, tens, here ones and tens. Start comparing from this side. From 10th side, from 10th positions. Here it is 4 in this number, here it is a 4. So both are same equal. Then shift to the next position. Here it is 2 at 1's position and here it is 8 as 1's position. So which one is largest? Yes, 8 is the largest than the 2. So we put greatest sign towards the 8. Means students, if in two numbers, if numbers on the both numbers position are same, then we switch to the next number. Means ma'am wants to say that कि आपको 2 numbers given हो और उन 2 numbers में से जो आप सेम पोजीशन को कंपेयर कर रहे हो और उन पोजीशन के नंबर सेम हो, तो आप उससे नेक्स्ट वाले डिजिट पे जंप कर जाएंगे. सो इन दिस वी जंप टू द 2 एंड इन दिस वी जंप टू द 8. देन हमने फिर 8 एंड 2 को कंपेयर करा. क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट. हियर इट इज 65. 5 is at 1's and 6 is at 10's. And here is also a 5 is at 1's and 6 is at 10's position. So here it is a 65 and here it is a 65. So both are equal. Then put the sign of equals to. Now move to the another one is arranging. Means some numbers are given, we have to arrange them either in ascending order or in descending order. Okay students, ascending means from smallest to the greatest and descending means from largest to the smallest.
So let's proceed to the example to understand these terms. First of all, understand what is ascending. So students, these four numbers are given in front of you. You have to arrange these numbers in ascending order. Means from the given numbers you have to decide which one is the smallest among these four numbers. So student, which one is the smallest? Means सबसे छोटा कौन सा नंबर है इन फोर नंबर्स में से? Yes, 11. Then put 11 at first number. Then after 11, leave the 11. Now in remaining three numbers, which one is the smallest? Yes, after 11 it's 12. Now leave the 12 and 11. Which one is the smallest between 13 and 19? Yes, it's 13. And the last one is 19. So student, it is the ascending order of the given numbers. The given numbers का क्या है? Ascending orders. Means we arrange the numbers from smallest to the largest. Okay students, now proceed to the next term, that is descending. Let's take an example. So it is an example, or we can say a number given in front of you. Then from these numbers we have to arrange these numbers from largest number to the smallest नंबर. मीन्स आपको गिवन नंबर्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कौन सा नंबर अरेंज करना होगा जो इन गिवन नंबर्स में से सबसे लार्जेस्ट होगा. सो विच नंबर इज द लार्जेस्ट? यस, इट्स 88. सो राइट डाउन 88 फर्स्ट. आफ्टर 88, leave the 88. Which one is the largest? Yes, it's 48. Now after 48, which one is the largest? 38 or 28? Yes, it's 38. And the last one is 28. So the student descending order. Sorry students, it's descending. Descending order means we have to arrange the numbers from its largest to the स्मॉलेस्ट. मीन्स आपको गिवन नंबर्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जेस्ट पिक करना होगा, देन उससे नेक्स्ट नंबर का लार्जेस्ट, देन फॉलो दी पैटर्न. ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दी अरेंजिंग. Students, we begin our new topic, or very much important topic, that is addition. Okay, so students, we are going to do addition, simple addition, addition with 2 digits, and addition with carrying. Okay students, so start with the simple addition. Students, simple addition is the simple as you did in your previous class. Okay, just to add both numbers. Okay, or we can say just to add two numbers. So students, what will be the answer if we add 4 and 6? 4 plus 6 is 10. Okay students, 9 plus 8 equals to, yes, 9 plus 8 equals to, yes, it's 17. 7 plus 4 equals to, yes, give me answer. Yes, it's 11. 5 plus 7 equals to, 5 plus 7 क्या आंसर होगा स्टूडेंट्स? yes, it's 12. Okay, now next we do the addition with 2-digit numbers. Okay student, suppose these are the two numbers, we have to add these number. Okay student, so how to add? First of all, mark their place or position, ones or tens.
So students, we have to add one place digit in the ones place digit of the other number and tens place digit with the tens place digit of the another number. Okay students, हमें जो वन एक नंबर का वंस प्लेस का जो नंबर होएगा अनदर नंबर के जो वंस प्लेस पे होएगा उसी में ऐड करेंगे. सेम एज अगर उसी सेम नंबर का टेंस प्लेस का जो नंबर होगा वो अनदर नंबर के टेंस प्लेस के नंबर में ही ऐड करेंगे. वी डू नॉट ऐड लाइक दिस वंस प्लेस ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द टेंस प्लेस ऑफ अनदर नंबर. नो, हम ऐसे ऐड नहीं करेंगे. ओके, सो 3 + 4 is 3, 4, 5, 6, 7. Yes, so write down 7. 4 + 5 is 5, 6, 7, 8, 9. 9. So answer is 97. Let's take another example. So we have to add these two numbers. How to add these two numbers? First of all, mark their place. Here it is ones and it is tens. So add ones position number of this number and ones position number of this number. 2 + 7. 2 + 7 is 9. Write down 9. And 3 + 2 is, yes, it's 5. So answer is 59. Okay, clear students? Students, suppose if we add two numbers like these, means it is given like this in an horizontal manner, not in a vertical manner. So how to add these two numbers? First of all, mark their places. Ones, tens, ones and tens. Okay, so students, one main rule of addition is we have to add or we start add from वंस पोजीशन. ओके, हम वंस पोजीशन से स्टूडेंट ऐड करना स्टार्ट करते हैं, देन हम नेक्स्ट टेंस पोजीशन पे जाते हैं. अब टेंस के बाद भी नेक्स्ट पोजीशन दी हो तो उस पर स्विच करते हैं. ओके, स्टार्ट फ्रॉम दी वंस पोजीशन. सो in this number one's position number is 2 and in this number one's position number is 2. So add these two number of one's position. Okay students, so 2 + 2 is 4. Now add tens position number. Here it is 5 and here it is 3. So 5 + 3 is, yes, what's the answer? 5 + 3, it's 8. Okay, this is the answer, 84. Take another example. This is two number. First is mark the position ones, tens, and here it is ones, tens. Okay, so next one is we have to start add from ones position. To start adding ones position, 5 + 1 is 6 and 1 + 2 is, yes, it's 3. So the answer is 36. Okay students, so students, next thing in addition with two digit number is story or statement sum. Students, these sum will be like this, that is you have to solve the sum with the गिवन स्टेटमेंट. मीन्स मैम आपको ये कहना चाहती है कि आपको स्टोरी और स्टेटमेंट सम कैसे सॉल्व करने होंगे. स्टूडेंट्स, आपको कोई स्टेटमेंट दी होगी, मीन्स आपको लाइंस दी होगी, और आपको स्टोरी मीन्स आपको कोई बात कही गई होगी. आपको उसमें से उन कोई भी 2 नंबर्स होंगे या मोर देन 2 नंबर्स होंगे, आपको उनको ऐड करना है और आपको
आंसर फाइंड आउट करना है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इन दिस 20 birds live in a garden. Suppose student there is a garden, एक garden है, उसमें already 20 birds वहाँ पर रहते हैं. In winter 33 birds come in. Already उस garden में 20 birds रहते हैं, but winter में 33 more birds उन 20 birds को ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब उनके साथ आके रहना स्टार्ट कर देते हैं. हाउ मैनी बर्ड्स डज द गार्डन हैव इन विंटर. सो स्टूडेंट्स बताओ हाउ मैनी, अब टोटल कितने बर्ड्स हो गए गार्डन में. यस, तो हाउ टू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 20, then after 20 how many birds will join. 33. Here it is a ones position and here it is the tens position. How many we have to add? Put the sign of plus. This is the plus sign and then start adding. Yes, how to add? Ones position, 0 plus 3 is 3. You know na students, if we add 0 in any number then the answer is number itself. And 2 plus 3 is, yes, 5. So the answer is 53 birds. Clear students? So this is all about the story sum, or we can say statement sum. Let's take another example related to this story, or we can say statement sum. So next story is that a bus started with 32 children. Means in a bus there is already a 32 children sit in the bus. Later बाद में 27 children got in. Later बाद में 27 more children उसके अंदर उन्होंने 32 children को join कर लिया. तो बताओ अब how many children was there in the bus altogether. अब सारे मिलके children कितने हुए. So how to do it? We have to add 32 and 27. Now start adding 32, 27. Add these number 1s, 10s. 7 plus 2, yes, it's 9. 3 plus 2, 5. So total children is now 59 children. Students, this is the another way to add numbers. Suppose it is a 1 tens and 2 tens. Then how many tens they became? Yes, it's 3 tens. So students, now we write the place value of 3 tens. Means 3, and in tens how many 0? Only 1 0. So the answer is 30. Okay. Now 6 tens plus 4 tens. How many tens they became? 6 plus 4 is 10. So the answer is 10 tens. But final answer is we have to write the place value of 10 tens. To write 10. And in tens how many 0? Only 1 0. The answer is 100. Next one is 3 tens plus 3 tens. How many tens? Yes, it's 6 tens. So 6 tens will make the place value 60. Yes, 6, and in tens 1 0. So the answer is 60. Now students, last type of addition is, or we can say last way to add the number with the carrying. So with the carrying means, so first of all just understand the meaning of carrying. Carrying means you have to carry something. मतलब आपके पास कुछ आपने ले रखा है, ठीक है. So क्या ले रखा है in the terms of number? Now begin. So students, first of all we start adding from ones position. So write down the position ones in tens. Start adding. 5 plus 7, it's 12. Yes, so how to write 12?
1 2 ऐसे लिखते हैं हम 12. बट स्टूडेंट्स, इट नॉट अ करेक्ट वे टू राइट in the maths. Okay, how to write it? How to write it? Yes, how to write it? 5 plus 7 is 12. 1 2 12. Okay, so in the answer 2 is at 1's position and 1 is at 10's position. So we write 2 here only, because I told you earlier that we have to write only 1's position. मतलब मैम ने आपको पहले बताया था ना कि 1's पोजीशन पे सिर्फ 1's पोजीशन का ही नंबर लिखेंगे. तो 2 को आप यहाँ लिखेंगे 1's पोजीशन पे एंड 1 को आप ऊपर कैरी कर देंगे, मतलब इस नंबर के साथ इस 1 को भेज देंगे. तो इन नंबर्स ने 1 को कैरी किया हुआ है. दैट्स द मीनिंग ऑफ कैरिंग. ओके, आप 1 को इन नंबर्स 2 और 1 के साथ ऊपर कैरी कर देंगे, ऊपर भेज देंगे. ओके, नाउ वी हैव टू ऐड दीज 3 नंबर्स. हमें इन 3 नंबर्स को अब ऐड करना है. सो 2 plus 1 is 3, 3 plus 1 is 4. So the answer is 42. So that's the 42 is the final answer. Clear, students? Now take some more example to make it more clear to you. So this is the example. Mark the position, ones, tens. Now add, or we can say start adding from ones position. 7 plus 3. Yes, 7 plus 3 is 10. Write down 10. Not in the box of the answer. Just write it separately. अलग से लिखिए. Now in 10, 0 is at 1's position and 1 is at 10's position. So what we write here? आप यहाँ क्या लिखेंगे? Yes, we write the 0 position digit. That is 0. And 1 आप यहाँ दे देंगे. इन नंबर को आप कैरी कर देंगे. इन नंबर ने कुछ लिया हुआ है. क्या लिया हुआ है? ये 1 डिजिट कैरी लिया हुआ है. ओके, नाउ ऐड these 3 digit. Simply add these 3 digit. 6 plus 1 is 7 and 7 plus 2 is 9. Yes, so 90 is the answer. Now let's take another example. So first of all, mark the position ones, tens. So start adding from 1 position, 1's position. 7 plus 4 is, yes, 8, 9, 10, 11. So the answer is 11. Write it separately. So 1 is at 1's position and this one is at 10's position. So we write here 1's position digit. हम यहाँ पर जो इस आंसर में 1's position पे डिजिट है वो लिखेंगे. So write it once and carry this one to the tens. आप ये 1 यहाँ पर इनको दे देंगे कि आपके पास तो स्पेस है नहीं इस 1 को लिखने के लिए. तो आप क्या करेंगे, इस जो 10th पोजीशन वाला 1 है कह देंगे ये तुम्हारा 10th पोजीशन का 1 है, आप ही इस 1 को ले लीजिए. देन वी ऐड दीज 2 नंबर्स. क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर तो कोई नंबर है नहीं, तो आप इन 2 ही नंबर्स को ऐड करेंगे. 8 plus 1 is 9. Yes, 91 is our answer. Okay, students. So students, this is all about this week class. So you have to complete the work which ma'am will give in the worksheet as a day wise homework. Okay, students. Bye bye. Take care. Stay safe. Stay healthy.